वन्दे मातरं सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम। हाय एवरीबॉडी, कल है इंडिपेंडेंस डे, हमारी आज़ादी का दिन। प्लस कल छुट्टी भी है फ्रॉम वर्क एंड ऑफ कोर्स बहुत इम्पोर्टेंस रखता है ये दिन हमारी लाइफ में। एंड इफ जस्ट लिटिल बिट ऑफ समथिंग वी कुड डू फॉर आवर कंट्री, मे बी इन टर्म्स ऑफ सम गुड डीड्स फ्रॉम योर साइड, नॉट छोटी छोटी चीज़ें ओके यू कैन डू फॉर योर कंट्री। इट्स नॉट जस्ट दैट कि आपको बॉर्डर पे जाके लड़ना ही तो ये आप अपनी कंट्री के लिए कुछ कर पाएंगे। जस्ट लिटिल थिंग्स लाइक not loitering on the streets, not throwing baggage and garbage and trash on the streets, just to keep it clean and surroundings अपने areas में keep your city clean, keep your vicinity clean, so everything, little things in life. And flag, until and unless you hoist a flag on Independence Day, it doesn't feel like Independence Day. काइट फ्लाइंग कितनी होती है दिल्ली में, तो ऑफ कोर्स एज लॉन्ग एज आई वाज विद माई ब्रदर, जितने भी मैंने ये दिन सेलिब्रेट किया जितनी बार भी, वी यूज्ड टू बी flying kites on our terrace with loud music around, so it used to be so much fun. But in the last 3 years, I think यहाँ पे मैं 2 साल 2.5 साल मुंबई में हूँ, so this is going to be my third Independence Day and nothing much I have done except be working on this day. छुट्टी होगी, so of course I'm going to be having an off, but nothing much I think. So let's just do a bit and feel like Independence Day. आज मैं एक flag decorate करने जाती हूँ, like in a shape of rangoli. Okay, that's Brooke, my friend. So happy Independence Day to everybody. Okay, he says happy Independence Day. हमारे ये जो colors हैं, especially the 3 colors in our flag signifies something. Okay, so the saffron color signifies the sacrifice of the soldiers जो हमारे देश के लिए लड़े. Okay, so this stands for that, the saffron, हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए. Alright, so it comes on the top of the flag, then comes the white in between, which of course everybody must know stands for peace, शांति के लिए white color शांति का प्रतीक होता है, it signifies peace. Then comes green signifies the green revolution that came, हरियाली, हरित क्रांति, so it signifies that. I know it's थोड़ा clumsy बना है पर it's okay, feeling अच्छी होनी चाहिए, heart, so that's more important. So that is the rangoli of my flag, my Indian flag, and yes, so far so good. I'm proud to be an Indian, and it's a good feeling, on the day. Tomorrow, nothing great I would be doing, but yes, I will just buy a flag to keep it in my car. I think सुभाष चंद्र बोस बहुत ही हिट रहे हैं, जो हमेशा से जिनका स्लोगन भी रहा है, जिनका बहुत बड़ा नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. Besides that, I think all these, Sarojini Naidu, she's called the ultimate Nightingale, Bal Gangadhar Tilak, okay, then we have Lal Bahadur Shastri. All these people have really fought for the independence of our country and contributed to a great extent. And Bhagat Singh, for that matter, died at the age of 23. So imagine, just looking at their sacrifices, come to think of it, we have done nothing for our country. So I do my bit. I just want to be a good citizen, cause no trouble, no harm to my country mates. So in that manner, I could just contribute in becoming a good citizen of my country and feel proud to be a part of it. Vande Mataram Sujalam Sufalam Malayaj Sheetalam Sasyashamalam Mataram Vande Mataram. So this was one song that अपनी स्कूल प्रेयर्स में हमेशा हमने गाया है और हर जगह. So that's how we've learned it. अगर स्कूल्स नहीं होते तो आई थिंक हमें नेशनल एंथम याद नहीं होता, हमें वंदे मातरम का मतलब नहीं पता होता, याद नहीं होता. So thanks to our parents who have sent us to school and
made us know the knowledge. Wish you a very, very happy Independence Day, and just celebrate in the best possible way you can, and have fun.